अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are going to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. I think everything is perfectly fine. So let's start. So in our last session we were talking about data formats. और इसी data formats को अब आगे हमें further carry on करना है. आगे हमें देखना है इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमारे पास. So let's see where we were. O-levels, data formats. So in our last session we talked about बच्चों हम लोगों ने टेक्स्ट एंड नंबर्स के बारे में बात करी थी कि हाउ वी स्टोर डाटा इन टेक्स्ट एंड नंबर्स. Then we talked about the ASCII codes, we talked about the Unicodes, we talked about how a character is being stored in a computer system, we talked about sound, how sampling is being performed in sound, we talked about editing in sound that we have, we talked about sampling, sampling resolution, sampling rate and so on. तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी भाई लास्ट सेशन के अंदर. वी हैव अ क्वेश्चन. स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया. Sir, I wanted to ask that some examples of color codes are mentioned in the book. Do we have to learn them? Not at all. कोई जरूरत नहीं है भाई वो याद करने की. जमाल ठीक है, अच्छा सवाल था. कोई कलर्स की कोई एग्जांपल्स याद करने की नो नीड. ठीक है, ओके वेयर आई वाज. तो मैं आप लोग को बता रहा था भाई हाँ कि ये सब हमने साउंड को कवर अप के अंदर. अब बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग द इमेजेस. आज का हमारा मेन टॉपिक बच्चों इज इमेजेस फर्स्ट. एंड देन फिर हम आगे भी देखेंगे और कौन से टॉपिक्स हमारे पास इस चैप्टर के अंदर दैट वी नीड टू कवर देम अप. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों इमेजेस, when we talk about images, so images are of two types. दो तरह की हमारे पास images होती हैं. One type is called vector images and another type of images बच्चों are called raster images. Raster images evolved means to be called means, and they are also called bitmap images. So bitmap images बच्चों आप लोग के सिलेबस का पार्ट है A1 का, O-levels का. But vector images are not part of your syllabus. So the images that we are going to talk about will be only vector bitmap images. ठीक है, सिर्फ bitmap images के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो वो ये कि लेट्स से हमारे पास वन ऑफ आवर स्टूडेंट इस्माइल ने एक मोबाइल परचेज करा. एंड बच्चों दैट मोबाइल वाज 14 और वो बहुत खुश थे. उन्होंने अपनी एक पिक्चर उन्होंने बच्चों इंस्टा पे पोस्ट करी. बहुत लाइक्स आना शुरू हो गए. अब बच्चों जब इस्माइल ने इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखा, इस्माइल ने जब इस पिक्चर को जूम करके देखा तो दिस पिक्चर कंसिस्ट ऑफ टाइनी डॉट्स. दिस पिक्चर कंसिस्ट ऑफ टाइनी डॉट्स. दिस पिक्चर बच्चों कंसिस्ट ऑफ टाइनी डॉट्स. तो बच्चों दीज टाइनी डॉट्स आर एक्चुअली कॉल्ड पिक्सेल्स. इन टाइनी डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज पिक्सेल्स. तो ये जो आपका सबसे छोटा वाला मतलब छोटे छोटे जो आपके पास है तो दीज आर कॉल्ड पिक्सेल्स. ठीक है. अब बच्चों तो बिटमैप या रास्टर इमेज की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान हुई. इसकी डेफिनेशन बनती है हमारे पास इट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स. तो आपके पास बच्चों ये क्या है? एक कलेक्शन है. किस चीज का? पिक्सल. आपके पास कलेक्शन है. अब पिक्सल सर क्या चीज होती है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पिक्सेल्स, पिक्सल बच्चों क्या होता है आपके पास? दिस इज अ पिक्चर एलिमेंट.
It stands for picture element. So this is picture element. And if we want to define a pixel, the definition for the pixel is smallest addressable area, on a bitmap image. एक बिटमैप इमेज के ऊपर बच्चों सबसे छोटा हिस्सा जो आप लोग एड्रेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ पिक्सल. अब पिक्सल आपके पास बच्चों दो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. इंफॉर्मेशन कंटेन बाय अ पिक्सल आर टू. नंबर वन, कलर, कि उसका कलर क्या होगा पिक्सल का. एंड नंबर टू इज द ग्रिड पोजीशन, कि इमेज के अंदर बच्चों को पिक्सल कहां पे एग्जिस्ट करता है. तो ये दो इंफॉर्मेशन बच्चों आप लोगों का पिक्सल क्या करता है, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होल्ड करता है. नंबर वन कलर, नंबर टू वो आपके पास इमेज में कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द थिंग ग्रिड पोजीशन. अब भाई जिस तरह हमारे पास साउंड की रेजोल्यूशन थी, तो इसी तरह हमारे पास इमेज की भी रेजोल्यूशन होती है. अब इमेज के अब जो क्या करते हैं हम लोग, एक सिलेक्टेड एरिया डिफाइन कर देते हैं. लेट्स से दैट सिलेक्टेड एरिया वाज दिस वन. अब दिस एरिया बच्चों कैन बी इंच, दिस एरिया कैन बी पर सेंटीमीटर, एरिया कैन बी आपके पास कोई एरिया हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड इमेज रेजोल्यूशन. तो हम लोगों ने बच्चों इमेज रेजोल्यूशन को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया. आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस. मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन आपके पास क्या होती है, दिस इज number of pixels contained by an image per unit area. तो एक यूनिट एरिया के अंदर बच्चों आपके इमेज कितने पिक्सल्स कंटेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज रेजोल्यूशन. अब वो इमेज रेजोल्यूशन बच्चों कैन बी, दैट एरिया कैन बी पर इंच, दैट कैन बी पर सेंटीमीटर, दैट कैन बी पर मीटर एज वेल. अगर आप कोई बहुत बड़ा फ्लेक्स डिजाइन कर रहे हैं सो उसके ऊपर डिपेंड आ जाता है आपका. जनरली हम लोग पर इंच को ज्यादा कंसीडर करते हैं. नाउ इमेज रेजोल्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग फर्दर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट विल बी अगर मैं इमेज रेजोल्यूशन को नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया अगर मैं इंक्रीज करता हूं, तो क्वालिटी ऑफ द इमेज बच्चों क्या होती है आपकी, क्वालिटी विल बी इंक्रीज्ड. लेकिन पैरेलल के अंदर आपका जो फाइल साइज होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज. तो वो भी आपके पास क्या होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा. अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करनी है. अब दिस इज कॉल्ड, वो डेफिनेशन पहले हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे. द फर्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड कलर डेप्थ. फर्स्ट डेफिनेशन बच्चों इज कॉल्ड कलर डेप्थ. तो व्हाट इज कलर डेप्थ? कलर डेप्थ इज एक इमेज कितने कलर्स कंटेन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द कलर डेप्थ. सिंपल, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है. एक इमेज कितने कलर्स कंटेन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड कलर डेप्थ. ये तो मैंने डिफाइन कर दी डेफिनेशन. नंबर ऑफ कलर्स an image can contain. So that is called बच्चों color depth. Another one बच्चों, another definition that comes is bit depth. अब बच्चे, even some teachers दोनों वर्ड्स को ना काफी कंफ्यूज कर रहे होते हैं. तो ये आप लोगों का बच्चों बड़ा क्लियर होना चाहिए कि बिट डेप्थ और कलर डेप्थ में क्लियरली आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है. एंड बिट डेप्थ इज, although they are relative to each other, but the difference should be crystal clear. And the other word bachcho is bit depth. So when we talk about bit depth, so bit depth is number of bits per pixel.
तो एक पिक्सल आपके पास कितने बिट्स कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड बिट टैब। एक इमेज कितने कलर्स कंटेन करती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कलर टैब। लेट्स हैव एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बच्चों। द क्वेश्चन वाज, आपके पास एक इमेज है एंड दैट इमेज बच्चों इज containing 16 colors, that image containing 16 colors। तो बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, this becomes the color tab, number of colors। अब एग्जाम में रिक्वेस्ट करेगा व्हाट विल बी द बिट टैब कैलकुलेट करो, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द बिट टैब, लेट्स सी। मुझे पता है बच्चों 2 to the power 4 is equals to 16, so this 16 is actually our color tab। ये हमारी कलर डेप्थ होती है बच्चों। एंड दिस 4 इज रिप्रेजेंटिंग अस, ये 4 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बिट डेप्थ। ये 4 हमें क्या बता रहा है, बिट डेप्थ। ये 4 बता क्या रहा है, ये बता ये रहा है कि 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 पिक्सल। तो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड 4 bits for 1 pixel if the color depth is 16 colors। अब इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दें, अब इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दें। अब मेरे पास जो मेरे बड़े प्यारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि बिट डेप्थ और कलर डेप्थ क्या है। मैंने आप लोग को एक और सवाल दिया, मैंने आप लोग को बोला भाई द कलर डेप्थ is 256 colors। An image can contain 256 colors। मैं चैट पे लिख के बताएं जरा भाई, what will be the bit depth? bit depth क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, what will be the bit depth? I'm waiting for your answers। मैं चैट पे लिख के बताएं what will be the bit depth? ठीक है जमाल, आपका आंसर मिल गया मुझे, फाइन। बाकी बच्चे, सकीना, मनाहिल, व्हाट अबाउट योरसेल्फ, यू पीपल बच्चों। तो अगर हमारे पास यहाँ पे व्हाट विल बी द बिट डेप्थ, यहाँ पे बिट डेप्थ क्या होगी हमारे पास, लेट्स सी। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एटलीस्ट एक आंसर तो और आया भाई, सिर्फ जमाल का ही आंसर आया, ठीक है। तो मनाहिल राइट। तो बच्चों हाउ वी कैलकुलेटेड दिस, हाउ वी कैलकुलेटेड दिस, लेट्स सी। तो दिस मींस 2 to the power 8 is equals to 256। So 256 is the color depth and the bit depth will be, and the bit depth bachcho will be 8। This means 8 bits are required for 1 pixel, and that is also equals to 1 byte as well। That will be also equals to 1 byte। Now moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, and let's see। We are having another हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल है, लेट्स सी। We are having 32 colors image, 32 colors image हमारे पास। So what will be the stuff for this image बच्चों, again सर easy है, 2 to the power 5 will be equals to 32। So this means the image can contain 32 colors, the image can contain 32 colors, and the bit depth will be 5। The bit depth will be 5। So this means 5 bits are required for 1 pixel। Perfect। 5 bits are required for 1 pixel। ठीक है। सिमिलरली बच्चों एक और एग्जांपल, अब थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए। लेट्स से द इमेज इज हैविंग
सर इज देयर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिट्स दैट देयर कैन बी, नहीं नहीं, अब आपके पास तो इतनी आजकल मोबाइल फोन्स के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपके पास। इवन इमेज आजकल कंटेन कर रही है हमारे पास 2048 बिट्स पर इंच, मतलब बहुत ये, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी ज्यादा अपनी क्वालिटी बढ़ाते रहेंगे उतना अच्छा आपके पास बिट्स बढ़ाते रहोगे, उतनी अच्छी क्वालिटी होती रहेगी, ठीक है। सो एज सच कोई लिमिट नहीं है, लिमिट विल बी द हार्डवेयर। आपके हार्डवेयर, आपके पास स्क्रीन के अंदर इतनी अगर कैपेसिटी नहीं है डिस्प्ले करने की, तो दैट इज द लिमिट दैट वी हैव। ओके जी, नाउ बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आप 4K की कैपेसिटी नहीं होती बहुत सारे बच्चों के फोन के अंदर, इवन 2K भी नहीं, इवन 1K भी आप लोग वीडियोस नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन भी मैटर करती है बहुत ज्यादा। अच्छा, वेयर आई वाज, मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों, नाउ द वैल्यू दैट कम्स इज, लेट्स से 24 कलर्स। नाउ यू आर हैविंग 24 कलर्स। अब जब ये 24 कलर वाली बच्चों वैल्यू आई, तो अब ये आप लोग को फॉरन इससे हिट करा, तो यू पीपल विल बी लाइक कि सर इफ वी गो विद 2 to the power 4, so we can represent 16 colors. If we go with the 2 to the power 4, we can represent 16 colors. लेकिन अगर हम जाते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5, तो that will be 32 colors. तो बच्चों जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो we always go with the upper bound. हम लोग अपर बाउंड के साथ जाएंगे, we always go with the upper bound. तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, तो we are always going with the upper bound. Because I cannot represent 24 colors in 16 combinations, but I can represent 24 colors in 32 combinations. No, 4.5 is not the right answer. तो हम लोग हमेशा अपर बिट के साथ जाते हैं, 5 बिट्स के साथ जाते हैं, ठीक है। तो बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो जमाल दैट्स व्हाई वी गो विद द अपर बाउंड। तो पेपर में जब भी सवाल आ जाए, तो ऑलवेज गो विद द अपर बाउंड, तो आप लोग अपर बाउंड के साथ जाओगे। ओके जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब समटाइम्स आपका एग्जामिनर एक और वर्ड आप लोगों के सामने हिट करेगा। तो आई होप बच्चों अब आप लोगों को बिट डेप्थ और कलर डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कलर डेप्थ इज नंबर ऑफ कलर्स एक इमेज कंटेन कर सकती है आपके पास, एंड बिट डेप्थ इज नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और, एंड लेट्स टॉक अबाउट एक और वोकैबुलरी आपका एग्जामिनर यूज करता है, एंड दैट वोकैबुलरी इज मोनोक्रोमैटिक इमेजेस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वोकैबुलरी बच्चों जो आपका एग्जामिनर यूज करता है, मोनोक्रोमैटिक इमेजेस। अब मोनोक्रोमैटिक इमेजेस का मतलब क्या होता है? दिस मींस एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। इसका मतलब बच्चों एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। अगर एग्जामिनर बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के बारे में बात कर रहा है, तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, एंड दैट इज वन बिट will be always equals to 1 pixel। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा, एक बिट विल बी इक्वल्स टू 1 पिक्सल, ठीक है। सो जनरली हमारे पास ये होता है, ब्लैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद 1, और व्हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों विद 0। सो जब भी ये सवाल आ जाए भाई मोनोक्रोमैटिक इमेज है, तो रिमेंबर 1 बिट विल बी इक्वल्स टू 1 पिक्सल। नाउ बच्चों देयर इज अनदर वोकैबुलरी जो आप लोग को इमेजेस के लिए पता होनी चाहिए, एंड दैट वोकैबुलरी इज, कभी कभार आपकी इमेजेस के अंदर आप लोग एक वोकैबुलरी यूज करते हैं कि पिक्सेल्स फट गए, तो दैट एक्चुअल वोकैबुलरी इज डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन होती कब है? जब आपके पास इमेज रेजोल्यूशन आप लोग की बहुत रिड्यूस कर दें आप। तो एक वक्त आता है बच्चों कि आपके पास आपकी इमेज जो है वो क्या करना शुरू होती है, वो पिक्सलेट हो जाती है, वो डिस्टॉर्शन हो जाती है उसके अंदर। सो हमने उन्होंने डिस्टॉर्शन के बारे में भी यहाँ पे पॉइंट नोट करा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन इज number of bits per pixel are reduced quality
is reduced image is distorted when we zoom. ठीक है, तो जब आप अपनी इमेज को जूम इन करेंगे तो आपकी इमेज के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आना शुरू हो जाएंगे बिटवीन द, आपको गैप नजर आना शुरू हो जाएगा बिटवीन द पिक्सेल्स. सो दैट्स व्हाट आपके पास डिस्टॉर्शन इज ऑल अबाउट. एक आखिरी बच्चों डेफिनेशन है, आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए बिकॉज यू आर स्टडिंग इमेजेस, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन रेजोल्यूशन. तो स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बच्चों बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके पास. तो स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है हमारे पास? स्क्रीन रेजोल्यूशन इज, screen resolution बच्चों is number of pixels, number of pixels a screen can display, a screen can display horizontally, horizontally and vertically. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट बच्चों अबाउट द स्क्रीन रेजोल्यूशन. सो दैट वाज बच्चों ऑल अबाउट द इमेजेस. अब बाकी जब इसके हम लोग पास पेपर्स करेंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास इमेजेस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, अगर यहाँ तक बच्चों ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगर यहाँ तक ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे यहाँ पे मूव ऑन करें. ठीक हो गया, मनाहिल ने बता दिया हमें और 3 बच्चों ने और बता दिया हमें यहाँ पे, क्लियर क्लियर क्लियर. ठीक हो गया, ठीक है अब्दुल बासित एज वेल. सो नाउ बच्चों हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब एक और हमारे पास टॉपिक आता है. दिस टॉपिक इज कॉल्ड, दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन. सो सबसे पहला सवाल तो आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि भाई व्हाई वी compress our data, हम अपने डेटा को कॉम्प्रेस क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल तो आप लोग को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी कॉम्प्रेस आवर डेटा. सो बच्चों वी कॉम्प्रेस आवर डेटा, हम अपने डेटा को कॉम्प्रेस करते हैं. देयर आर मेनी रीजंस. द फर्स्ट रीजन कैन बी टू सेव मेमोरी, मेमोरी बचाने के लिए. अनदर रीजन बच्चों कैन बी टू स्टोर more amount, to store more amount of data at a given space. Third reason बच्चों, the main reason, I think this is the one, easy to transfer, easy to transfer बच्चों data over a network or over internet. Another reason बच्चों, to increase efficiency, to increase efficiency of memory storage devices. तो इन डिवाइसेस की बच्चों अगर आप लोग को एफिशिएंसी भी इंक्रीज करनी होती है तो वी गो विद दिस कंप्रेशन टेक्निक. तो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर, आपको के माइंड में होने चाहिए. दैट दीज आर द रीजंस दैट दैट्स व्हाई वी कंप्रेस आवर डेटा. अब बच्चों कंप्रेशन की आपके पास आपके सिलेबस के अंदर 2 टेक्निक्स हैं. आप लोगों ने शायद कभी नाम सुना भी होगा इनका. दीज 2 टेक्निक्स बच्चों आर कॉल्ड, these 2 techniques are called lossy versus lossy data compression. बच्चों data compression
वर्सेस बच्चों लॉसलेस लॉसलेस डेटा कॉम्प्रेशन। तो भाई कंप्यूटर साइंस की सबसे अच्छी बात ये कि आप लोगों को बच्चों 50% तो आप लोग को नाम में ही बच्चों क्या होगा, आप लोग को मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। लॉसलेस डेटा कॉम्प्रेशन मतलब डाटा लॉस नहीं होगा, लॉस ही मतलब बच्चों डाटा आपके पास क्या होगा, लॉस हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों के डिफरेंसेस आप लोग को पता होने चाहिए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लॉसी डाटा कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं जरा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, जब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉसी के बारे में, सो व्हेन compression is original file cannot be retained, you cannot retain बच्चों the original file further बच्चों, it's a permanent loss of data। further बच्चों आप मैक्सिमम एक फाइल को आप लोग 90% तक क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। मैक्सिमम 90% तक आप क्या कर सकते हो, फाइल को कॉम्प्रेस कर सकते हो। फर्दर बच्चों दिस इज generally applied on images, sound and videos। जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं बच्चों लॉसी डाटा कंप्रेशन के अंदर, दैट टेक्निक इज कॉल्ड, द टेक्निक दैट वी यूज, टेक्निक इज कॉल्ड perceptual compression। दैट टेक्निक बच्चों इज कॉल्ड परसेप्चुअल कंप्रेशन। अब ये परसेप्चुअल कंप्रेशन क्या होती है, आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज परसेप्चुअल कंप्रेशन। नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट, तो लॉसी का कोई पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास, यू कैन नॉट रिटेन द ओरिजिनल फाइल, ठीक है। परमानेंट लॉस होता है बच्चों आपके पास डेटा का, मैक्सिमम 90% तक आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, and generally you apply this on images, sound and videos, and maximum the technique that is used is called perceptual compression। now when we talk about bachcho lossless data compression technique, so this is when we decompress original file is obtained। तो जब हम इसको डीकॉम्प्रेस करते हैं बच्चों आपके पास ओरिजिनल फाइल आ जाती है। फर्दर नो लॉस इन डेटा एंड बच्चों नो लॉस इन क्वालिटी। तो आपकी क्वालिटी के अंदर कोई लॉस नहीं होता, आपके डेटा में बच्चों कोई लॉस नहीं होता। मैक्सिमम दैट यू कैन कॉम्प्रेस, मैक्सिमम आप लोग एक फाइल को ऑन एन एवरेज 50% तक कॉम्प्रेस कर सकते हो। एंड जनरली बच्चों अप्लाई on text and numbers, on images, on sound, on videos। तो आप लोग हर जगह यहाँ पे ये RLE को अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो टेक्निक होती है आपके पास, टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड, टेक्निक यूज बच्चों इज कॉल्ड RLE, दिस इज रन लेंथ एंड कोडिंग। तो अब इन दोनों टेक्निक्स के बारे में बच्चों वी नीड टू टॉक अबाउट परसेप्चुअल कंप्रेशन, वी नीड टू टॉक अबाउट RLE। तो रन लेंथ एनकोडिंग और परसेप्चुअल कंप्रेशन के ऊपर हमें बात करनी है। तो एक दफा रिकैप करें, अगर लॉसलेस टेक्निक हो तो बच्चों
ओरिजिनल फाइल आप लोग क्या करते हो, ऑब्टेन कर लेते हो। नो लॉस इन डाटा, नो लॉस इन क्वालिटी, मैक्सिमम यू कैन कंप्रेस 50% एंड द टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड इज आरएलई। आप लोग आरएलई यूज करते हो यहाँ पे फॉर कंप्रेसिंग द डाटा। ठीक है भाई, यहां तक आई थिंक ऑल गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी चेक। ठीक है, अब्दुल जब्बार हमें यहाँ पर टेक्निक का नाम बता रहे थे भाई कि सर, सॉरी अब्दुल, हाँ अब्दुल जब्बार तो बता रहे थे सर लॉसी और लॉसलेस हमारे पास दो टेक्निक्स होती, तो मैंने ऑफ कोर्स बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। तो बच्चों यहाँ तक ऑल गुड आई थिंक। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं हमारे पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंड नाउ, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिर्फ द राइट प्लेस, यहीं पे बात कर लेते हैं या नीचे बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बच्चों परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन फर्स्ट। देखिए हमारे पास एक ह्यूमन है। अब इस ह्यूमन की बच्चों साउंड साउंड लिसनिंग कैपेसिटी क्या है, 20 से लेके 20,000 किलो हर्ट्स, सॉरी 20 किलो हर्ट्स, मतलब 20,000 हर्ट्स, मतलब इसकी लिसनिंग कैपेसिटी। अब हमारे पास एक साउंड की फाइल थी, इसमें बच्चों कुछ साउंड अवेलेबल था। दैट साउंड वाज 18 हर्ट्स। तो बच्चों ह्यूमन एयर तो ये साउंड सुन ही नहीं सकता। सिमिलरली एक साउंड था बच्चों दैट वाज 30 हर्ट्ज। ह्यूमन एयर बच्चों ये साउंड सुन सकता है, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन एयर टू अंडरस्टैंड, टू लिसन टू दिस साउंड, मुश्किल होगी। तो बच्चों अब हमारे पास एक साउंड है, लेट्स से 200 हर्ट्ज। तो दिस इज द साउंड ह्यूमन ईयर आराम से क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टारगेट करते हैं ऐसे साउंड को दैट इज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमंस, दैट इज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डाटा को रिमूव कर देते हैं इन परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। तो जो डाटा ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हम उस डाटा को बच्चों रखते हैं। बाकी जो डाटा मुश्किल हो थोड़ी सी भी ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने के अंदर, तो वी रिमूव दैट पर्टिकुलर साउंड। सो दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट करा परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन क्या होती है हमारे पास। परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन इज we remove we remove the bits we remove the bits that are difficult for the humans to understand. So perceptual compression में बच्चों it's a lossless technique of course, and we remove the bits that are difficult for the humans to understand. Now अब हम बात करते हैं बच्चों आरएलई के बारे में। आरएलई थोड़ा सा डिटेल्ड आपके पास टॉपिक है, तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे बात कर लेते हैं। आरएलई बच्चों स्टैंड्स फॉर रन लेंथ एंड कोडिंग। दिस इज run length and coding. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बच्चों, एक डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको पूरा टॉपिक पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर वर्ड की फॉर्म में भी लिखवाऊंगा। तो लेट्स से दिस वाज द डायग्राम बच्चों दैट वी हैव। हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम थी, एक पिक्चर थी हमारे पास। दिस वाज द पिक्चर बच्चों दैट वी हैव, एंड दीज आर द कलर्स दैट वी हैव, येलो 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 येलो। Similarly, the next row was blue, 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 blue. The third row बच्चों was green,
then we were having some blue, then yeah. तो बच्चों ये इमेज थी हमारे पास having multiple rows available. So these are the rows that we have. Row 1, row 2, row 3, and so on. Row 4 and so on. अब बच्चों इस आपके पास इमेज की कलर डेप्थ थी हमारे पास 256. इसकी हमारे पास कलर डेप्थ क्या थी? 256 कलर्स. तो अगर इसकी कलर डेप्थ बच्चों 256 थी तो आप लोग को पता है इसकी बिट डेप्थ क्या होगी हमारे पास? द बिट डेप्थ विल बी 8 बिट्स पर पिक्सल, या 8 बिट्स पर पिक्सल का मतलब है 1 बाइट एज वेल. तो एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए आई नीड 1 बाइट. तो अब अगर मैं पूरी रोमन को देखूं तो मुझे कितनी बाइट्स चाहिए? आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इस पूरी रो को स्टोर कर आई नीड 12 बाइट्स. अब मैं आरएलई अप्लाई करता हूं. आरएलई करेगा क्या? कॉम्प्रेस करेगा डाटा को. इट्स अ कॉम्प्रेशन टेक्निक. डाटा को आपके कॉम्प्रेस करेगा. पहले 12 बाइट चाहिए थी, अब कितनी बाइट चाहिए? तो क्या करते हैं हम लोग? हर कलर को एक कोड असाइन कर देंगे. लाइक अगर येलो है तो येलो को मैंने कोड असाइन कर दिया वाई. अब ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है? आई नीड टू लुक आफ्टर दैट. तो येलो रिपीट हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. तो मैंने येलो को कोड असाइन करा बच्चों. दैट कोड वाज वाई. एंड हाउ मेनी टाइम्स येलो रिपीटेड? सर 6. अब मैंने ग्रीन को बच्चों एक कोड असाइन कर दिया. दैट वाज जी. एंड हाउ मेनी टाइम्स दैट being repeated? 3 times. So G3. और बच्चों अगेन येलो आपके पास कितनी दफा रिपीट हो रहा है? येलो दैट इज Y. एंड हाउ मेनी टाइम्स? सर 3 times. सो बच्चों फर्स्ट दिस रो वाज नीडिंग 12 बाइट्स. अब बच्चों हमारे पास एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे पास 1 बाइट चाहिए होती है. तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो हाउ मेनी बाइट्स आर नाउ रिक्वायर्ड? 1 2 3 4 5 6. तो अब हमारे पास सिर्फ 6 बाइट्स रिक्वायर्ड है टू स्टोर दिस रो. एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए वी नीड ओनली 1 बाइट. इफ यू पीपल रिमेंबर द एक्स की कोड्स कंसिस्ट ऑफ 7 और 8 बिट्स. तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे कितनी बाइट्स चाहिए? वी नीड 1 बाइट. 1 बाइट चाहिए. तो अगर मैं 1 बाइट यहां पे स्टोर करता हूं, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट चाहिए, तो मेरे पास 6 कैरेक्टर मुझे स्टोर करने. तो बच्चों आई विल बी नीडिंग 6 बाइट. तो मैं ये ट्रांसफर करूंगा y6 g3 y3. मैं ये क्या करूंगा? मैं ये ट्रांसफर करूंगा इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस पैटर्न. मैं वो प्रीवियस पैटर्न ट्रांसफर नहीं करूंगा. ठीक है भाई. सो रो 1 के लिए बच्चों आई नीड 6 बाइट. देख ले ब्लू. ब्लू को मैंने ऐसा कर दिया बच्चों. लेट्स से बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So how much for this? Sir, B 12. So I need बच्चों 3 bytes to store this. 1 byte for B, 1 byte for 1, 1 byte for 2. जब आपके पास आप इस फाइल को डीकॉम्प्रेस करोगे तो आपकी बैकएंड के ऊपर एल्गोरिथम को पता होता है कि भाई B इज फॉर ब्लू. और इसका मतलब आपको कितनी दफा इसको 12 मतलब आ रहा है आपके पास. तो आपको इसको डीकोड करना है. 12 पिक्सेल्स आपको प्लेस करने हैं ब्लू के एंड वाइस वर्सा. एंड द लास्ट रो जो हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो दिस इज green 3, blue 4 and yellow 5. So total number of pixels that are required are 6. So भाई पहले हम पर 12 12 12 36 pixels bytes required थे. And now you just need 6 and 6 12 12
15 बाइट्स आपको सिर्फ रिक्वायर्ड है अब इस डाटा को स्टोर करने के लिए। So this is the technique बच्चों of RLE, run length encoding. This is the technique बच्चों of RLE, run length encoding. Each color is 8 bits. Jamal is asking. नहीं, each pixel is of 8 bits. तुम्हारी मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा. Each pixel is for 8 bits. That is 1 byte. ठीक है. तो बच्चों आरएलई हम लोग यूज करते हैं अपने डाटा को कंप्रेस करने के लिए. अगर हमारे पास सेम सीक्वेंस के पिक्सल को जब हम लोग कर सकते हैं. अगर सेम सीक्वेंस के पिक्सल नहीं है बच्चों देन आपके पास आपका आरएलई फेल हो जाता है. सर कैसे फेल होगा? तो बच्चों लेट्स सी. रॉ नंबर यहाँ पे 11 है. मैंने यहाँ पे रॉ नंबर 11. मुझे एक रॉ स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड है? सर 12 बाइट्स. नाउ स्टार्ट करते हैं. 1 येलो, नेक्स्ट ग्रीन, then बच्चों blue, then yellow, then green, blue, yellow, green, yellow and blue. तो अब अगर मैं इसको डीकोड करता हूं बच्चों, लेट्स से सबसे पहले येलो इंक है मेरे पास. यू कैन सी 1 येलो. so this will be y1. देन बच्चों ग्रीन 1 है g1. देन बच्चों ब्लू 1 है b1. देन येलो 2 है y2. देन ग्रीन 1 g1. देन बच्चों ब्लू 1 b1. देन बच्चों येलो 2 y2. देन बच्चों ग्रीन 1 g1. देन येलो 1 y1. देन बच्चों ब्लू 1 b1. तो अब अगर मैं टोटल बाइट्स काउंट करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो बच्चों मैं तो चला था अपने डाटा को कॉम्प्रेस करने. 12 बाइट्स को कॉम्प्रेस करने पर चला वो 12 बाइट्स और बड़ी हो गई बच्चों एंड दे कन्वर्टेड इनटू 20 बाइट्स. तो बच्चों आपके पास आरएलई फेल हो जाता है इफ आपके पास सेम सीक्वेंस के अंदर पिक्सेल्स ना हो. इफ यू आर नॉट हैविंग पिक्सल इन द सेम सीक्वेंस देन आपका आरएलई क्या होगा? योर आरएलई फेल्स. ठीक है. तो ये बात भी बच्चों हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे. लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द वर्डिंग फॉर्म ऑफ आरएलई. अब जरा मैं वर्डिंग की फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं आरएलई. आई होप आपको भी आरएलई समझ में आया होगा कि हाउ वी एक्चुअली कंप्रेस द डाटा. So when we talk about बच्चों RLE, let's write down in the wording form as well. It's a lossless data compression technique. Lossless data compression technique reduces file size if file contains identical bytes. ठीक है. तो identical मतलब सेम bytes, वरना फाइल साइज बच्चों बड़ा कर देगा उल्टा. आइडेंटिकल bytes. The repeating sequence is encoded into two values. The repeating sequence बच्चों is encoded into two values. One value is the code for that sequence.
the other value is the other value बच्चों represents number of identical characters. एक छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों आप लोग यहाँ पे. एग्जांपल कैन बी A B B B. So this will be A4 and B3. Further बच्चों, you should know about the problem in RLE. RLE में जो problem है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. Problem in RLE. So the problem बच्चों that we have in RLE, अगर आपके फाइल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो आपकी फाइल कॉम्प्रेस होने के बजाय क्या होगी, उल्टा और बड़ी हो जाएगी. तो हमने ये बात नोट करी यहाँ पे, हमने ये पॉइंट नोट करा यहाँ पे. इफ we don't have same identical pixels, if we don't have बच्चों same identical pixels in a sequence, pixels are changing constantly. तो बच्चों in that, so instead of compression, your file size will be increased. तो भाई आइडेंटिकल पिक्सेल्स अगर नहीं होंगे आपका फाइल साइज क्या हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीज्ड. तो दैट इज द प्रॉब्लम बच्चों दैट वी हैव विद आरएलई. आरएलई के लिए हमारे पास सीक्वेंस के अंदर क्या होने चाहिए, हमारे पिक्सेल्स होने चाहिए. सो आई थिंक बच्चों दैट्स इट. आज इसको हम लोग बच्चों यही ना होल्ड करेंगे. We talked about the images, we talked about the resolution, we talked about compression technique, we talked about RLE, we talked about बच्चों color tab, bit tab, we talked about the definitions. So I hope all good यहाँ तक. Sir, if most are identical, only some are different, नहीं फिर तो हमारी फाइल कॉम्प्रेस हो जाएगी जमाल, वरना अगर लेकिन नहीं ऐसा तो हमारी फाइल कॉम्प्रेस होने के बजाय उल्टा बड़ी हो जाएगी. ठीक है. सो बच्चों कल आप लोग का क्विज है, आप लोग को पता है नंबर सिस्टम का. मैं आप लोग के साथ लॉगिन डिटेल्स भी शेयर करूंगा आज रात तक. तो आप लोग सुबह जो है वो अपना क्विज अटेम्प्ट करेगा. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्विज एज वेल. और इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फॉर द टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.